Good morning, student. In previous lecture yesterday about the unity of command, according to this principle, an employee should be receive order from only one boss, either superior, and should be accountable to one superior only. Okay, because if he receiving order from more than one boss, then he will get confused. Whose order must be executed first, and whose second one? So मीन्स इस यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत व्यक्ति को एक ही बॉस के अकॉर्डिंग ऑर्डर मिलना चाहिए. यदि एक से दो के तौर पे उसे यदि ऑर्डर मिलता है देन वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका ऑर्डर फॉलो करे और किसका नहीं करे, या किसका पहले करे किसका बाद में करे. ओके, फॉर एग्जांपल इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन. ओके, एम्प्लॉय इफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड to go slow production mainly quality standard by production in charge. Okay, who gave him order? Production in charge. And sales in charge instruct them employee to fasten the production of meet the pending orders. Okay, one more production in charge instruct employee to go slow, that can be quality maintain of the product. And another in charge, sales in charge instruct them employee to fasten to fulfill the pending orders. So in this situation, employee will get confused whose order must be followed there. Maintain the quality of product, either complete fulfill the pending orders. So in this case, clashes may be arise there. Okay, so first there may be positive effect and negative effects. First, positive, no confusion in the mind of subordinate. If he get receive order from one boss, then there will be no confusion, no ego clash, and improve impressive in the working. Okay, violation of this principle will lead following consequences. First, confuse in the mind of employee. If he employee get order from either more than two boss, then he will be confused 100%, and confuse his mind. He will be disturbed, and subordinate will get chance to escape from his responsibility by giving excuses. Okay, easily he will be escape from his duty. Now ego clash among the different superiors, 100% the chance will be arrive. First, production in charge give order, either instruct to employees go slow down so that can maintain the quality of product. And second one, sales in charge instruct them go faster to fulfill the pending order. So in this case, the ego will be clash of the both in charges. Okay, so this point already we completed. You can understand by this picture. Okay, in first right position, one is boss there, and he or the employees get a order from his, okay, from him one by one. So this is the right conditions. Okay, another we take example. Suppose in this situation there are three bosses, 1 2 3, and employee get receive order, he receive from 1 2 3, he receive from, so he will be confused whose order must be follow, first A, B, either C. So in this case, clashes may be arise there. Okay, so this is wrong way and this is right way. First way is right way, so this method will be accepted in this command. Okay, unity of command, measure keywords, order from one boss only, more than one boss, confuse the subordinate, and contradicts function formship techniques. Okay, now next point, the unity of command completed. Then next, unity of direction. And this point, according to this principle, one unit means one plan. Okay, one unit means one plan. That is, the effort of all the member employee organization must be direct toward one direction, that achieving the common goal. Okay, यहाँ पे यदि एक यूनिटी है, एक ही यूनिट है, तो सारा प्लान भी एक ही होना चाहिए, और सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए उनका कॉमन गोल होना चाहिए. इफ द प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन लीड टू अ सबऑर्डिनेट, ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान ओनली. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, okay, if organization is producing different line of production, cosmetic, medicine, confectionery item, each product has its own market and its own business environment. Each division must plan its target, and every employee of the division must put his effort toward the achievement of the plan. The division or under the direction of head only
on no account should be working different department overlap. ओके, इस कंडीशन है यदि डिफरेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्शन लॉन्च कर रहे हैं तो सुबह के वहाँ पे वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो अचीव नहीं कर पाएंगे. Okay, positive effect of this principle. First, achievement of organizational goal can easily possible if we follow one unity in directions in one direction. Second, effort of all the employee get unified toward the one direction only, then we can achieve easily our objectives. Consequence of violation of this principle: lack of coordination. Okay, suppose one organization product launch different type of product, so there is a lack of coordination between each and every department work for their on development. They will not go in only one desired organizational goal. So second, wastage of effort and resource by working different directions. So different department working in different directions. Okay, difficulty in achieving organizational goal. Okay, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होगा यदि ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक नहीं अलग अलग है तो. ओके, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी कमांड एंड यूनिटी डायरेक्शन. ओके, डिफरेंस बिटवीन different between unity and direction. Principle of unity command and direction. This principle insists on one boss and one subordinate. Okay, this principle insists means suggests only one boss is there and one subordinate, so employee can easily accept their order and fulfill their order. The principle insists on one unity division one plan. Okay, unity one है उनका division plan होने, so only यूनिटी इन कमांड एंड डायरेक्शन आर बहुत अप्रॉक्सीमेटली लगभग सिनोनिम्स डायरेक्शन में काम करते हैं कि एक बॉस है तो एक ही ऑर्डर फॉलो करना होगा. यदि दो है या तीन है तो उनका कन्फ्यूज क्रिएट होगा. यहाँ पे एक ही यूनिटी है, एक ही डिवीज़न, एक ही प्रोडक्ट है, इजीली वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे. और यदि दो से ज़्यादा है प्रोडक्ट है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. सेकंड पॉइंट, द मेन पर्पस ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयज. ओके, द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन. ओके, मेन पर्पस है कि जो कन्फ्यूजन अवॉइड होगा उसको अवॉइड कर सकते हैं इसमें कि कमांड एक देगा तो इजीली वो वर्क आउट कर पाएंगे. यदि दो कमांड है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, सो इसको अवॉइड करना ही अच्छा है. द पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द इफोर्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ वन डिपार्टमेंट इज अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डिपार्टमेंट. और पर्पस ऑफ यूनिटी डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द इफोर्ट ओनली एम्प्लॉयज ऑन वन डिपार्टमेंट. ओनली वन डिपार्टमेंट इज देयर मस्ट बी हैविंग दैट एंड अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट. ओके, सपोज देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट सो दे कैन नॉट बी अचीव देयर गोल्स. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स. Third, this principle is related to function of employees with a clarity of mind. This principle related function of employee clarity their mind. Okay, then employee get a receive order from one boss, then clear in his or mind, so they can work easily. If he get receive two either more than two bosses, then they will be confused. They will be not have any clarity. Okay, next, this principle is related to function of the organization as well as whole as a unit. Okay, next last point. This principle result in systematic working and improve the efficiency by removing confusion and chaotic condition. Okay, ये प्रिंसिपल जो है आपका सिस्टमेटिक वर्कआउट करेगा और एफिशिएंसी भी इंप्रूव करेगा. रिमूविंग बाय कन्फ्यूजन और chaotic कंडीशन जो मतभेद का है कंडीशन है कन्फ्यूजन वो सारी क्रिएट इसमें नहीं हो पाती, सारी रिमूव हो जाती है यदि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. और दिस प्रिंसिपल रिजल्ट इन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी डिफरेंट पर्सनैलिटी. और इसमें कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट एक्टिविटी का डिफरेंट पर्सनलिटीज का साथ में. Okay, unity and direction keywords. One unit, one plan. Effort of all the employee must be direct toward only one goal. Unification of effort toward the one direction. Different department work under the one directions for getting desired goal and based on coordination accept. Okay, now 6 point. This is 6 point. Subordinate of individual interest to general interest. Okay, subordinate of individual interest to general interest. According to this principle, the interest organization must be spread interest individual or employees. Okay, according to this principle, interest of organization must be spread interest of individual or employees. In the organization, all the employees are working with the some objective and there is always an objective organization. If the objective of individual are in the same direction, organization
then there is no problem. But if the objective of both group are in different direction, the manager must try to reconcile individual interests with the organizational goal, and if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organization goal. Okay, for an example, before buying a raw material, the manager must compare the price and quality of the all suppliers and give order to the best rather than giving order his own relative by misusing his power. Okay, this is the main point of this subordinate of individual interest to general interest. ठीक है, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बजाय जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए सबॉर्डिनेट का. यहाँ पे बस एग्जांपल दे रखा है कि जो जब मैनेजर यदि रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो कंपेयर करेगा प्राइजेस का, क्वालिटी का ऑफ ऑल सप्लायर, जितने भी सप्लायर्स हैं, एंड गिव ऑर्डर बेस्ट रेदर देन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिटेलर बाय मिसयूजिंग पावर. यदि वो अपना मिसयूज़ नहीं करा पावर का तो वो बेस्ट जो सप्लायर्स हैं उसको ही ऑर्डर देगा. जो क्वालिटी में अच्छा मेंटेन करेगा, प्राइस उसका सही है, तो उन लोगों को ऑर्डर देगा ताकि उसका बेस्ट रिजल्ट हो. ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स है. अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल इजीली मिल जाए. कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस वायलेशन, यहाँ पे कुछ वायलेशन के चांसेस भी. नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट नहीं होता यदि आप इसको वायलेशन करते हैं इस प्रिंसिपल को. और इवन एम्प्लॉय विल ऑल्सो सफ़र इन ए लॉन्ग रन. ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय भी काफ़ी सफ़र करेंगे लॉन्ग रन के तौर पे. ओके, कीवर्ड्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.